किसी भी डिज़ाइन को फास्ट करने के लिए यू नीड टू नो द बेसिक शॉर्टकट्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। आवर फर्स्ट शॉर्टकट इज Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट और नया Coreldraw फाइल क्रिएट करने के लिए। सेकेंड शॉर्टकट इज Ctrl+O कोई सा भी Coreldraw फाइल जो पहले काम हो चुका हो। थर्ड शॉर्टकट इज फ्री हैंड टूल F5 क्रिएटिंग लाइन। फोर्थ शॉर्टकट इज F6 for creating any type of shape. Fifth shortcut is F7 for creating circle. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला शॉर्टकट है F8 for text tool. Next shortcut is Ctrl+C, Ctrl+V and Ctrl+X। किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V और कट करने के लिए Ctrl+X। नेक्स्ट शॉर्टकट इज Ctrl+I किसी भी JPG और PNG को एक्सपोर्ट करने के लिए। Then when you want to export the image or text into any type of file, then press Ctrl+E, then choose the file destination and the type PNG, JPG or PDF what you want export, and then select the resolutions, press OK. Image is exported. Next shortcut is Ctrl+S to save the file. My file is already saved, so the shortcut is Ctrl+S. Next shortcut is Ctrl+G to group object, texts or anything. Ctrl+G to group it and Ctrl+U to ungroup it. And the most used shortcut is Ctrl+Z. Example Ctrl+Z, or when you want to redo it to go forward, then the shortcut is Ctrl+Shift+Z. Ctrl+Shift+Z.